Bismillahirrahmanirrahim. I'm your host Hamza Anwar and you're watching Compare Education Pakistan. Today we are going to read Unit 6, The Elephant and the Bird from the book English Language for Grade 9, Balochistan Textbook Board Quetta. In this part we are going to do the part 1. So let's start reading. Chicks. बच्चे. Passed by گزرا. A long way. एक लंबा रास्ता. Itched خارش. Prickly heat यानी झुलसा देने वाली गर्मी. Scratching ھرچنا. Back यानी पीछे. Crack शगाफ दराड़. Lecture number 1. In the middle of a jungle stood a tall but thin tree. एक जंगल के वसत में एक लंबा लेकिन पतला दरख्त खड़ा था. At its top, a tiny bird had made a nest for her family of 3 little chicks. उसके ऊपरी हिस्से में एक नन्हे से परिंदे ने अपने 3 नन्हे बच्चों के खानदान के लिए घोंसला बना दिया था. They enjoyed peace and quiet there. वो वहाँ अमन और सुकून से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे. One day an elephant passed by. एक दिन एक हाथी वहाँ से गुजरा. He had walked a long way and he was feeling hot and tired. वो लंबा सफ़र तय कर चुका था और उसे गर्मी और थकावट महसूस हो रही थी. His thick skin itched in the prickly heat. उसकी मोटी जिल्द पर चुभती गर्मी की वजह से खुजली हो रही थी. So he leaned against the tree and began scratching his back. चुनांचा उसने दरख्त के साथ टेक लगा लिया और अपनी पीठ को कुरचने लगा. The tree started to crack and to move to and fro. दरख्त टूटने लगा और इधर उधर हिलने लगा. So that is it for today's lesson. Subscribe to our channel Compare Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notifications. And also like our Facebook page Compare Education Pakistan. Allah Hafiz. See you in my next lesson.